नमस्कार गाइस, एआई मास्टर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है ना, डाउट होता है कि लाइक बीटेक के बाद कैसे यूएस के यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना होगा, कैसे क्या व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे जाना होगा एंड ऑल। ये सारा डाउट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं विद सौभाग्य। ओके, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड अभी वो यूएस में है। सो ही विल गिव ए ब्रीफ इंट्रो अबाउट हिमसेल्फ एंड ही इज फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। ओके, इस एनआईटी के बाद ही वो यूएस आ गया and वहाँ पे मास्टर्स किया, देन पीएचडी एंड ऑल। सो ही विल काइंड ऑफ गिव यू ब्रीफ अबाउट हिमसेल्फ फर्स्ट, देन हम धीरे धीरे सारा प्रोसीडियर जो भी होता है हम जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे जाना होता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं एंड ऑल। ओके, सो सौभाग्य, कैन यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello everyone. First of all, thank you, Ruturaj, for asking me to join this podcast. I believe I can share my information about myself and anything, anything anyone has to ask. So yeah, sure, why not? So guys, like my name is Subhagya Naik, and currently I'm pursuing my PhD here at Arizona State University. I work in rehabilitation robotics. So I also came here to pursue my master's. I completed my master's in robotics. Then I switched to PhD. And before that, मेरी सारी पढ़ाई एनआईटी राउरकेला में थी, तो मैं वहाँ पे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया था यहाँ आने के लिए। देन आई केम हियर अगेन एज आई सेड फॉर मास्टर्स। देन करंटली आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी। तो चल रही। नाइस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, लाइक व्हाई यू चोज टू गो अब्रॉड? कि क्या क्या इंडिया में लाइक एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मतलब यहाँ प्लेसमेंट भी 10 लाख का लगता है। आई नो दैट एंड यू आर द टॉपर ऑफ द बैच। सो व्हाई लाइक यू वेंट फॉर अब्रॉड? um, देखिए, मेरे हिसाब से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे एनआईटी राउरकेला में, मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पे एक्सपीरियंस खराब होता है। बिल्कुल सही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट बात आपको यहाँ पे आ जाती है कि आपको आगे जाके करना क्या है। सो so my definite goal was to pursue research and do something in my field. So that was definitely my first motivation to like go beyond whatever like I was studying there. तो मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को लगा कि जो भी लैब फैसिलिटीज है और स्पेसिफिकली जो मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च था जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, अगर कोर मैकेनिकल में होना होता तो शायद कुछ बातें अलग होती। बट मेरा इंटरेस्ट था रोबोटिक्स एंड मेरे को लगा कि वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो मेरे को वो सब कुछ दे सकता था, सो दैट आई कुड परस्यू हायर एजुकेशन देयर। बट अगेन, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद प्रोफेसर्स एंड everyone there. So I had a good time there, but I felt there are definitely shortcomings. So the primary motivation was definitely to get a higher exposure, to work in a better lab with highly sophisticated equipments. That's definitely goal in your mind. So that was definitely my motivation. Again, to be very frank, I didn't have a very clear picture. Okay, this is what I'm going to do, but the rough estimate was definitely there. Okay, I need to do something beyond like what I was doing back then. Okay, nice, nice. So abhi like let's dive into like what were like the preparation and how did you went through it. Okay, my first question is like the interview. So how do like students जो भी prepare कर रहे हैं, how can they apply like after BTech? कब apply करना होता है, like third year के बाद या fourth year के बाद, and कैसे करना होता है, like like what are the class of universities to apply? Yeah, can you give it? Uh, yeah, sure. So अप्लाई करने के लिए तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री कंप्लीट हो, लाइक बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो, ये जरूरी नहीं है। यू कैन स्टिल अप्लाई ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर एज वेल, बट बाय द टाइम यू गेट देयर you need to have your, at least even if you do not have your diploma right there with you, but you still need to have a completion certificate that you completed your previous degree that you're claiming. Okay, I was pursuing this, and right now I'm going to the next level. Let's say from bachelor's to master's, or from high school to. Some people do come here for getting under to get an undergrad degree, but the percentage, even though slightly low, but still, you need to show like some form of like completion of your previous work. So generally,
एज लॉन्ग एज मेरे हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि दो एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट इज द GRE और ग्रेजुएट रेकॉर्ड एग्जाम। ये बेसिकली मैथ एंड इंग्लिश का टेस्ट होता है। देन ये आपको मैंडेटरीली देना होता है। ड्यूरिंग कोविड या देयर वर एक्सेप्शन जहाँ पे उनको स्टूडेंट्स को नहीं करना होता था, तो जस्ट GRE ना दे के भी लोग आ सकते थे। बट इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली एंड it's it actually boosts your application if you have a GRE and TOEFL scores. And TOEFL or IELTS, that's the second exam you have to take. It's more of a English proficiency test, in which you have to show like your proficiency in speaking, writing, listening, and some form of hearing as well. There are a couple of tests, but you have to either choose one, either TOEFL or IELTS. That's one test, and GRE is definitely, I believe, in my opinion, it boosts your application. Okay, GRE is basically aptitude type questions, and TOEFL is English proficiency level kind of test, right? Like speaking, writing, listening, and yeah. Okay, so I, like what? in, Okay, in my opinion, GRE is a slightly harder exam than TOEFL, but yeah, I think that's where people need to focus a little bit if you're getting to or like preparing to get that degree or sorry, get that exam. But otherwise, TOEFL, in my opinion, if you're already studying in a university where the language or the medium of instruction is English, so I don't necessarily feel like you would need extra additional preparation. Yeah. okay. For GRE, additional preparation is required. I believe so because like I don't think like we focus more on literature, like having a strong vocab like that is required, and even in GRE you have to write two essays like so you will be you have like specific 1 hour time to write two essays. So in this day and age, if you do not write like and it's a proper like a there will be question and thought provoking questions and you have to answer them in a descriptive manner and you probably need to get in touch in that. At least So I'm not like saying. कहाँ पे like they can prepare like any sources, any you can remember. Yeah, I do remember. I certainly took Magoosh Prep. So it's Okay. an online, uh, I think, platform where you can get like preparation material for GRE and TOEFL as well, because both the exams are actually uh, conducted by the US, like US agency. So it's their platform. No, it's not like Magoosh uh, is the organization that conducts the exam, but so Magoosh is technically from here, and those two exams are also conducted by here. So they can give you like very close information, Kochai Yoga. So in my opinion, that could really help. But there are other materials. I'm not Awesome, saying this awesome, is the only. awesome. So like ये fees कितना होता है generally like this GRE and TOEFL का fees to apply? one. Uh, GRE and TOEFL के फीस एग्जैक्टली तो याद नहीं है पूरा मैंने कितना दिया था, but I believe it costs somewhere around like $150 to $200 to take just one test. But don't hold me against that. The prices might have changed, but yeah, Okay. it Yeah. takes about something like that. लगभग I remember you said me that time 10 से 15 हज़ार के around आता है. Yeah, So yes. around yes. So that's Right. $200. $200 is pretty much Okay, like so like let's say someone applied for GRE and failed. वो fail हो गया kind of. no, no, there is no pass and fail in that. No. You will get a score. You will get a Okay. score. Okay. So तो so अगर it's score like one. like say for example score खराब हुआ, so how like after how long he can reapply? I mean, there is no restriction on tests. Like these are like not tests like that's happens. So it's once a year, twice a year. It's like these are generic tests. Like they take place. Like if I'm certain, like they take place multiple times inside a month. So you can just take a date and take the exam. So you have to go So to the center center probably. like center जाना होता है, center Yes, जाके देना yes. होता कोविड के टाइम में आई बिलीव अलाउ किया जाता था घर से लेने के लिए, बट अगेन दैट्स स्टिल शेडी एज वेल. सो है. आई बिलीव लाइक if you're taking the exam, go to the center, do it in an official way that supposed to. Nice, nice. Center generally state में each state has the center, right? Um,
Right now, maybe, but when I was studying, TOEFL had center in Bhubaneswar, but for GRE there's no center, so I had to actually go to Kolkata. Okay, nice, nice. This is a very important information that you gave. Thanks for that. Okay, so now let's come to the okay. पहले हमारा GRE हो गया, TOEFL हो Uh-huh. गया. Then what to do? Like यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होगा कि क्या करना होगा? Uh, What's the process? yes, after you get the GRE score and TOEFL score, because since these are like basic requirement, right now you can definitely apply to any specific university that you're looking towards, and for sure. So you start the application. Application for universities, they look very similar. Some might have a slightly different information requirement, but in general, they are pretty generic. What actually that's more about like taking information about yourself and your previous degree or what you're doing. But in my opinion, the most important things which students should focus is obviously your letter of recommendation that you need to get from a professors and statement of purpose. Like, you need to show like why you're actually trying to pursue this degree. So in my opinion, those are two defining factors, like whether you're getting in or not. That's where like you get a space to explain because like you you can explain like your story, who you are, like why are you even applying here, what's your story. So the people in the admission committee would like to know your story. So that makes a whole lot of difference because you cannot change a whole lot of things like your GPA. If you have got certain GPA, you cannot change that. If you have got a certain score, G8 also, even though you can retake it, but once you got it, that's pretty much fixed. The only space you can actually make your modification is definitely getting a compelling letter of recommendation from professors. If you have worked with them, that's obviously going to help you, but and statement of purpose because you are going to write that, so you can So write your own. basically, though I think the major चीजें जो you are saying that is one is the letter of recommendation by a prof and second is the statement of purpose. वो खुद से Perfect. लिखना होता है, right? Okay, nice. Yes. So guys, अगर you need help, like सौभाग्य writes very well, like research papers भी वो बहुत अच्छा लिखता है जो abstract होता है research papers का and all. If you want like to connect with him to write this statement of purpose और कैसे like recommendation letter recommendation लिखवाना है and then sign it with your professor, you can Perfect. definitely connect with him. मैं description में link दे दूंगा how to connect with सौभाग्य. You can connect with him. Okay, do check out the description for that. अभी नेक्स्ट मूव करते हैं. सो ओके नाउ लाइक हाउ डू यू डिसाइड द यूनिवर्सिटीज, क्लास ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं यूएस में जनरली? um, इसके यूनिवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए तो बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं. द रैंकिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ देम. आई एम नॉट, बट दैट शुड नॉट बी like the final thing. Only the you also need to see if the program that you are going into, if it is that good or not. Like let's say for example, everyone knows MIT. Okay, we know that MIT is a top school, but it's a top engineering school. So I'm not certain like if you're going to get some other degree that is not engineering, it's very difficult to know whether just because the MIT is rank one or overall rank one that means that it will have a very great program in every department. So that cannot certainly be taken as granted. So in my opinion, you definitely need to look into what program you're going into, and if you could get like a ranking system that could provide information about your program or at least your area of research, or if not even research, like your field, then that should be a defining factor, like whether you should go to university or not, or you should apply this or that. So definitely, in my opinion, you need to apply at least 8 to 10 universities. If you're willing to apply for top schools, sure, go ahead, apply for at least 4 top schools, then some moderately ranked schools, and then some safe schools. Like this is how I would apply because the top schools usually are private schools and their intake is very low. And specifically when you're applying for masters, uh, usually it's like applying for private universities, so they will be filled by their own students. Like their Okay. own undergrad students will come and fill up their master students. So just keep that in note. Like just don't aim for the ranks and
just do a overall holistic review and apply. So you said about ranking. So like which ranking? Like कौन सा ranking generally देखना चाहिए? Like there are a lot Um, rankings. I used to follow the US ranking, US rank. and yeah, that I believe like very authentic. Then Times Mhm. Higher Education that also gives you a ranking, but again, the rankings are good all in all, but you still need to do your own research. What programs you're trying to get in, and if you have future plans to pursue research, or like if you want to work with a professor during your time here, then you definitely need to look into the program and the professors, what kind of research going on. That will definitely give you a fair idea whether you should apply there or not. Okay. ठीक है. So now next question comes कि like after BTech can someone go for masters or can he directly go to PhD? क्या करना चाहिए and क्या नहीं करना चाहिए? Um, you can look. There is no restriction on getting a PhD right after your undergrad. That's Mhm. totally doable. I'm not saying it's not doable. I know people who have done it. Um, it also like saves you from like education costs, like because masters is not a funded program, but PhD is a funded program where your education is paid for, your research is paid for, and you'll also get a stipend as well besides that. So, but the problem with like getting to PhD degree right away from BTech is whether you have that qualification. Even I would rephrase that term. Like, if do you have that experience? Like, you can go ahead and start in a lab, which will be definitely a good quality lab or sophisticated labs here. And do you have that prior experience to directly go there and start from day one? So that definitely is a big question, because like when a professor is willing to take you as a PhD student, they will need to believe in you that okay, they can invest in you in the next 4 to 5 years so that they can train you to become someone like as a student to a doctoral. I mean, this a student that can actually finish the doctoral program and go on to become a professor or become industry giant or someone like. Yeah. But the Okay. important factor is whether they can believe it or not. So that's where it is a little harder to convince, because you will have to go through interview Okay. and convince Nice. the. So yes. Okay, got it. So Abhi, let's like first we gave the GRE TOEFL exam, then like the application letter of recommendation, purpose thing, that statement of purpose is done. तो अभी apply भी हो गया kind of to universities. उसके बाद क्या होता है? Like does the university gives the offer letter or how it is? Yeah, once you apply to the university, definitely you're going to get a response. The response time could vary from university to university because there is no one centralized system here. So that's why you might have to wait. Some university might give you a result in, let's say, just 2 to 3 weeks. Some might take a month or two. So that time varies, but but the university definitely responds back to you because you applied there. And once you get back or hear back from them, they'll let you know like if they offering you an admit or not. That's pretty simple, yes or no answer. So each university का जब apply करते हैं like उनका fees भी अलग अलग होगा, right? यस, अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल होगा भी. एंड जनरली ऑन एन एवरेज में बता सकता हूँ कि इट कुड वेरीज somewhere between, I have paid like somewhere between like $50 to as high as $115, because I Nice. remember जब मैं इशू के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने $115 पे किया था. आज के टाइम में बदल सकता है, बट उस टाइम में 115 था. और उस टाइम पे वो सबसे महंगा वाला फी मैंने दिया था, बिकॉज और जो यूनिवर्सिटीज को मैंने अप्लाई किया था वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, बट स्टिल समवर लाइक 70 80 But but, समवर. but still it's very expensive, right? Indian इन माय students के ओपिनियन, लिए it's very expensive. 10 में इन माय like ओपिनियन 10 को यस. अप्लाई करना $1000 चला गया kind of. मैंने तो ऑलमोस्ट लाइक 80 90 थाउजेंड खर्चा तो किया था, बिकॉज आई अप्लाइड अबाउट लाइक 11 और 12 यूनिवर्सिटीज, तो मैंने खर्चा तो किया था. Okay. तो हाँ, ये इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो. बट investment in yourself or investment in your dream. But हाँ,
जो है वही है, मैं वही बता सकता हूँ। आई मतलब डोंट कोई सी, रिफंड भी नहीं होता, अगर गया तो गया, राइट? गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, सो एज ओके। सिंपल एज दैट। ओके। बट मैं ये बता सकता हूँ, कोविड के टाइम में कुछ यूनिवर्सिटीज ने किया था कि वो फी हटा दिए थे। So, and in some cases, we can reach out to them, like to admission committee, if they can waive off your application fee. हो सकता है अगर वो लोग कर रहे हैं कुछ कुछ and your application is good enough, they might do it, but it's not guaranteed. नॉट So इन I जनरल। won't, yeah, in general. So I cannot generalize that. That's exceptions. ओके, सो जनरली यहाँ पे एक लाइक स्टूडेंट्स का डाउट होता है आईवी लीग। सो आईवी लीग Sure. कॉलेजेस क्या डिफरेंट होते हैं, लाइक उनका चार्जेस हाउ इट इज, हाउ डिफरेंट है? Now, Ivy Leagues are like some of the top private schools here. So they so in Ivy League, and important thing, people think like, okay, everything, all the top schools are in Ivy League, but they are not actually. Uh, there are some schools which are there. These are elite schools for sure, but that doesn't necessarily explain that these are the only schools where great research is conducted, or or only great professors are here and not other universities. As far as I have roamed around the United States, I can assure you, like every state, like the I would, like highly, I have high regard for a generation or two back who actually invested their money to build these universities. In every state here in this country, will have one or two good universities, which are like doing really great research. They'll have a good engineering program or law school program, medical school programs. So they will have these things. So I don't certainly believe only chosen Ivy schools are the only schools program education. ओके, ठीक है। सो अभी लाइक लेट्स से यू गॉट सिलेक्टेड इनटू वन यूनिवर्सिटी, तो उसका ऑफर लेटर आता है, राइट? कि यू गॉट सिलेक्टेड, क्या कैसे होता है, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? How like once you get that offer letter, that will clearly state like whether you got in or not. And if you got in, then you can accept like n number of universities. Let's say you applied 10 universities, and you got admit from seven and three reject. So you can apply, you can accept all seven universities offer letter. That's totally fine. But then the next step comes is getting an I-20. So I-20 is a document like you need to receive from the university that you finally decide to go, because that's a immigration document, and you will need to have that like whenever you enter this country. So the process goes like once you finalize, okay, this is the university out of like seven, this is the university I want to go. Then your next step is like whatever their tuition fee is, at least one first year's tuition fee. You need to show them the financial proof. Okay, this is the tuition fee for the year, and you need to show that you have at least that amount or more than amount in either in your bank account, or if your parents are sponsoring you, you can show their bank statement, or they can be your sponsor, or a third case like I believe in majority of the students do, that is like getting a student loan. So then if you are actually relying on student loan, then you have to apply a student loan, get it approved, then send this to the university, then the university will send you I-20 back. ओके, सो पहले स्टूडेंट लोन अगर चाहिए, स्टूडेंट लोन पहले अप्लाई करना होता है, एंड फिर I-20 डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना होता है टू द या यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट लोन के लिए, वो लोग भी मांगेंगे कि कहाँ पे जा रहे हो। तो अगर जैसे मेरे केस में था कि मैं एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी आना चाहता था, तो वहाँ से मेरा ऑफर लेटर था, एंड I actually reached out to Prodigy Finance, and I shared my documentations and all the legal documentation that is necessary, like your ID, then your offer letter, and any relevant information that you might have to give them what they need. Then they'll review your application and let you know like if they can give you the student loan or not. And there are also cases like whether you're going for collateral based loan or non-collateral based loan. So in my case, it was completely non-collateral. So I didn't have to show any wealth or no guarantor for getting that loan. But in some cases, if you're taking the loan from
uh, like banks like HDFC Bank or SBI Bank or any bank can give you student loan. That's not a problem. Uh, the bigger question is like if you have collateral, any bank will give you a loan. If you do not have collateral or guarantor, that's where it becomes tricky. As far as I understand, Axis, HDFC give you the non-collateral loan, and I took it from Prodigy Finance because of lower interest rate. ओके, गॉट इट। तो लाइक यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता है जनरली एजुकेशनल लोन्स में? जब मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे मेरे को HDFC अबाउट 11.75 इंटरेस्ट बता रहा था. एक्सिस pretty same like 12% बता रहा था, and then I was getting 7.5% interest rate from Prodigy Finance because that is not India based, that is from a company from um, United Kingdom, UK. So that's why they are giving me less interest. So that's why, and they also didn't require the collateral as well. So that's why I ओके, went सो Prodigy अगर लाइक Finance. लोन जब आप लेते हो तो इमीडिएटली उसी साल से भरना होता है कि कैसे भरना होता है? Loan, you just need the approval letter that your lender can lend you the money. That's all the let's say for I can simplify the steps. I applied for Prodigy Finance, showed okay, I have my offer letter. Can you give me a loan based on my credit or whatever I had at that point? Then they said yes, they can give me the loan, and they gave me approval letter that we will sponsor your education. We will give you the student loan. With that approval letter, you send it to the university that yes, I do have the financial strength to pursue this degree and pay for my education. Then the university verifies that, and they will give you the I-20 documentation that will be your immigration documentation going forward. नो, आई एम सेइंग आस्किंग आई वाज आस्किंग अबाउट कि जो पेमेंट करना होगा कब से करना होगा, लाइक आप मास्टर्स के बाद जब जॉब Uh, करोगे तब पेमेंट करोगे या फिर Oh, इमीडिएटली? the repayment रीपेमेंट। to the repayment. मेरे केस में तो Prodigy Finance के केस में I didn't have to pay anything right away. Even I had like 6 months of like grace period after completion of my degree. So I completed my degree, then 6 months, then I started paying. But the ओके, interest always, as always, will start from day one, as ओके। usual. For the interest, any for any इंटरेस्ट bank. लाइक इंटरेस्ट गेट्स ऐड ऑन लाइक, लेकिन पेमेंट करना होगा 2 साल, Yeah, मतलब yeah. मास्टर्स के 2 साल के बाद, काइंड ऑफ Two सिक्स and a मंथ्स half, 2.5. In my case, it was 2.5. But आप चाहो तो payment कर सकते हो. No one is restricting you to ओके, give them the payment, but you're not legally bound to pay anything by 2.5. ओके। सो अभी लाइक सो जो बैंक लोन प्रोसेस हो गया है एंड आई टू, लाइक हाँ, जनरली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना बैंक लोन जनरली चाहिए होगा अगर कोई मास्टर्स करने जा रहा है यूएस, तो उसके लिए कितना बैंक लोन जनरली लिया जाता है? Um, ये तो केस वैरी करता है. मैं एक जेनरिक फिगर बता सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज कितना जरूरत हो सकता है. बिकॉज व्हेन यू से लाइक कितना लोन चाहिए, it includes like first the main important cost is your education fee, your tuition fee. Second cost will be your like your accommodation, food, or like where you are going to stay. So that also constitutes a big chunk of your loan. Even though you can, after you come here, you can pursue part-time jobs and try to cover your, at least I'm certainly sure you can cover your accommodation and, uh, let's say fooding. But it's not always certain, right? Like you're not necessarily or guaranteedly given a job right away you come here. So just a base estimate, like to be safe, like considering that you do not have to do any job. I would say 50 lakhs is a amount you should have it. The number should be there on your mind. But again, this number could vary if you go to a state like here, like in the United States, if you study states like Texas or Florida, then the rates might be lower when you compare that to studying in states like California or New York or Massachusetts. Then living cost and food and everything is higher there. So that cost could So, go up. लगभग 50 लाख हम मान के चलेंगे, 50 लाख का अराउंड चाहिए, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। तो ये तो मतलब थोड़ा तब ये से जरूरी इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि 50 लाख पूरा खर्चा होगा. बट मैं बोल रहा हूँ कि इतना तक होना चाहिए कि वर्स्ट केस में अगर आपके पास कोई
पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा है और आपका काम बहुत है, मे बी दैट्स अगेन प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। सो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने आ रहे हैं या लेट्स से रोबोटिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आ रहे हैं, शायद दो प्रोग्राम challenging, it's demanding, so you have to spend more time on the coursework that you're taking. It may not be easy for you to do a part-time job as well. And the contrary, if you're coming here to pursue architecture, or again, I'm not demeaning any specific branches, but again, some programs, like my point is, like some programs are not that demanding. Like what I understand here, like architecture or like civil engineering, they're not that demanding. So you might have space in your schedule to go and pursue a part-time job. So, but again, the number जो मैंने बोला, एक ओके प्रॉफिट। ठीक है। सो अभी लोन भी अगर हो गया, काइंड ऑफ एवरीथिंग दैट्स डन, सो अभी नेक्स्ट आता है आई गेस वीजा अपॉइंटमेंट, राइट? यस ओके, सो लाइक ओके, I-20 डॉक्यूमेंट के बाद ही वीजा अप्लाई करना होता है, राइट? यस I-20 डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ही आप कर सकते हैं अपना वीजा अपॉइंटमेंट। वीजा अपॉइंटमेंट के लिए लाइक ऑनलाइन जाके वीजा लाइक फॉर्म भरना होगा, राइट? Yes, you have to. There are two fees that you have to pay. One is say visit fee, that is like student exchange and visitor program. I don't exactly recall the full name, but it's called CVs because the name will be right there on I-20. And दूसरा होता है visa fee, तो separate देना होता है. So these are two fees that you have to pay, like for your visa processing. Uh, $350 was like a serious fee, and somewhere very close to $200 was the visa fee. इतना देना होता है. And then you have to schedule. So there are two times you have to go to a US consulate. First time is for the biometric, and the second time is the actual interview. Uh, yeah, for actual interview for immigration and Okay. get an visa. So like what interview questions are asked in the visa interview? Like can your visa get rejected also? Yeah, your visa can be rejected, but the important question is on what grounds. That is more important to understand rather than just getting feared that okay, your visa can be rejected. So the questions, what I understand, is very straightforward. वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम ये होता है कि if you cannot show the link that the ties to your home country. कुछ केस में अगर आप स्टूडेंट हो एंड आप डिग्री खत्म करके बैचलर्स खत्म करके आप मास्टर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्लियर रेलेवेंस दिखाना पड़ेगा क्यों आप ये कोर्स करने जा रहे हैं, इससे आपके क्या फायदा होगा. यू स्टिल हैव टू शो लाइक यू हैव योर टाइज टू द होम कंट्री. आपका क्वेश्चन और आपके आंसर से उनको भी कहीं ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे बस जा रहे हैं काम करने के लिए और बसने के लिए. तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. अगर आपने जॉब किया है राइट आफ्टर बैचलर, completing bachelor's, did job for let's say 1 or 2 years, then you applying there. Then your reasons need to be very clear why you're leaving your job, what you're currently working, unemployed, and going there to start education again. So you have to frame your answers very clearly, how it is going to help your career. So as long as you can give clear answers to them, I don't see any reason why or like why they will reject it. राइट, अगर किसी को डाउट है तो लिंक में जाके सौभाग्य से कनेक्ट होके ये पूछ लेना. ओके, बेटर टू नॉट गेट रिजेक्टेड, लाइक पहले बात करके जाना चाहिए. रिजेक्शन इज हैंडल नहीं होता बहुतों से. ओके ओके, तो बेसिकली अभी वीजा इंटरव्यू हो गया. अब सोचो वीजा इंटरव्यू में यू क्लियर्ड आउट एंड काइंड ऑफ आपको मिल गया काइंड ऑफ अप्रूवल, राइट? और क्या मिलता है? Yeah, so if they approve your visa, they will take your passport right there. I mean that's like generic way of knowing like if your visa is approved, they will keep your passport. They won't return your passport. ओके, So नाउ ओके गॉट इट. सो अभी वीजा भी मिल गया, I-20 भी है, तो नाउ यू कैन लाइक ज्वाइनिंग लेटर आता है कि हाउ इट इज लाइक व्हेन कैन यू मूव? um, once visa is approved, you still have to wait to get that visa. I mean the visa means like a stamp right on your passport. So पासपोर्ट. passport रख लेते हैं. So it takes about 7 days. I think some youth consulate you can get in very couple of days. Like you can go there, pick it up from there. But if you're waiting to deliver, I would say like keep in window of 7 to 10 days.
so that वो passport आपके घर तक deliver हो. Once you have that, yes, you can go ahead and book flight tickets to United States, and yeah, you have everything ready, like at at least like legal document, immigration documents that you need, like passport है, I-20 है, and these are the two basic first major, I should say, the major documents you always need to get into this country. Because without these documents, you won't be allowed. सो अच्छा, सो लाइक व्हेन यू फ्लाई एंड लैंड देयर, सो ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे वहां पे, राइट? इमिग्रेशन। I mean, कुछ भी हो जाए, ये डॉक्यूमेंट आप मिस नहीं कर सकते. इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगा. अच्छा, हाँ, बिल्कुल. गॉट। These are the key documents. ओके, नाउ लेट्स से अभी आपका सब हो गया, हम उड़ भी गए, आप अब लैंड भी कर गए, यूएस में पहुंच गए, वहां पे इमिग्रेशन भी हो गया। अब व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप जब जाने के बाद, लाइक हाउ, कहाँ रहना है? ऐसे तो नहीं कि उड़ के चले गए आप डायरेक्ट। Yes, that's definitely a good question. देखिए, ऑब्वियसली आपको रहने के लिए रेंट करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आई थिंक आजकल तो चीज़ें बहुत बदल चुके हैं. आप आने से पहले ही आप कोई जहाँ पे आपको रेंट करना है वो सब बुक लीज साइन कर सकते हैं इवन बिफोर गेटिंग हियर. बट आई वोंट यूज दैट एज अ नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस, अगर आप इस कंट्री से नहीं है तो आपका कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए कोई आपको डायरेक्ट घर नहीं देगा टिल द पॉइंट यू गेट हियर. So what on an average happens is like you come here, I would recommend to try to organize an accommodation either in a hotel. That's like first thing in a hotel or like a Airbnb. Yes, if you know already some seniors who are staying here or you already contacted people already staying here, and if you can arrange some temporary accommodation with them, I would highly recommend that. उसके बाद क्योंकि आपको कभी राइट अवे घर मिलेगा नहीं यहाँ आते आते, सो दैट इज लाइक टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर 7 to 10 days एटलीस्ट मिनिमम आई एम सेइंग. उसके बाद या आप यहाँ आने के बाद डेफिनेटली आप जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद है नियर बाई यूनिवर्सिटी आपको अगर रहना है, आप जाके खुद वेरीफाई कर सकते हैं, लीजिंग मैनेजर से मिल सकते हैं, एंड यस, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद है तो आप साइन कर सकते हैं. जनरली यहाँ पे प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टीज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं वो जनरली 2 bed 2 bath का प्रॉपर्टी होता है. दैट मीन्स देयर आर 2 bedrooms 2 bathrooms, एंड अगर आप जनरली आई एम स्पीकिंग लाइक 4 स्टूडेंट इसको शेयर करते हैं तो कट दैट कॉस्ट डाउन. तो तो हाउ टू गेट दो लीजिंग मैनेजर्स? कोई ऐप है या हाउ? to be real honest, there are apps, but there are apps. I'm not going to say there are not. In the app that I use or like which is pretty popular in my opinion is there's something called Zillow. Zillow, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि आज के डेट में कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कब से अवेलेबल है, एंड वो प्लेटफॉर्म अलाउ भी करते हैं आपको लीजिंग मैनेजर से डायरेक्टली एक मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए, कब आके आप एक्चुअली घूम के देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कैसा है क्या है. एंड definitely Zillow helps. There are other platforms as well. I personally use Zillow. ओके, तो उसके बाद हाउस, सोचो अभी हाउस भी हो गया, आपने लीजिंग मैनेजर से बात कर लिया, हाउस भी ले लिया रेंट पे, अभी नेक्स्ट क्या करना होता है? बैंक अकाउंट तो एटलीस्ट खोलना पड़ेगा। Yes, so ये पैरेलली बस आपको घर नहीं ढूंढना है, पैरेलली आपको इमीडिएटली आने से ही आपको बैंक जाना पड़ेगा, एंड बैंक जाके आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा. अगेन वहाँ पे भी वो लोग वही सेम डॉक्यूमेंट मांगेंगे, योर पासपोर्ट एंड I-20 उनको देना होता है. वही थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे वही होता है कि बैंक को एक एड्रेस चाहिए so that they can send you your debit card and necessary documentation and they can keep an address as a proof. So आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप कहाँ पे एक्चुअली रह रहे हैं. या अगर एटलीस्ट डू नॉट गो टू अ बैंक to apply for an account if you do not know where exactly you are going to stay, because वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे टू वेरीफाई करने के लिए, एंड आपको डेबिट कार्ड भी वहीं पे आएगा जिसका एड्रेस आपको वहाँ पे देंगे बैंक में. सो आई वुड recommend try to finish or like finalize where you're going to stay. एक बार वो काम खत्म हो गया, then definitely go to a bank, open an account and take a number. I think that is uh, taking a number here, because you can still use the Geo number if you have, or Airtel also works here.
you can use that, but that will be expensive. So I'll recommend getting a phone number from here, right? फोन नंबर चाहिए कि वही दो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट एंड आइडेंटिटी? I think only passport will work. I don't think they care about your immigration document. Just passport as an ID. And in the meanwhile, once you get settled in, then you can definitely go ahead and get a state ID so that you don't have to carry your passport as a legal ID to go ओके, in. यहाँ पे एक लाइक एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, सो लाइक इंडिया में क्या होता है ना, आपको नॉर्मल दुकान से वो सिम कार्ड मिल जाता है, वहाँ पे दुकान वुकान होते हैं कि कहाँ जाना होता है बिल्कुल सिम? नहीं, दुकान है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दुकान नहीं है यहाँ पे। जो बड़े बड़े कंपनीज है यहाँ पे, टी मोबाइल और AT&T और वेराइजन, उनका स्टोर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना है तो आप अलग जगह पे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे सुपरमार्केट्स होते हैं, वॉलमार्ट का, कॉस्को का। हाँ, तो वहाँ पे जाके भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल स्टोर, यहाँ पे मेडिकल स्टोर में भी वो सिम कार्ड मिलते हैं आपको। बट आई ऑलवेज रेकमेंड, बिकॉज लाइक अगर फर्स्ट टाइम आप हो, आपका कोई हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, I would always recommend to go to the store so that you can verify all the documents. And because you don't want, once you take the number, it will starts working, and after some time, like they just close the service down because they could not verify who is the user. So आपको ये सब मामले में नहीं फंसना चाहिए, मैं बोलूँगा, until at least till the point आपका हिस्ट्री यहाँ पे कोई बना नहीं है। ओके, सो लेट्स से लाइक कोई इंडिया से ट्रैवल कर रहा है, अब सब कुछ हो गया फाइनली, अब आता है बात फूड का। सो हाउ इज द फूड, एंड क्या वो लाइक इमीडिएट एडजस्ट कर पाएगा वो अमेरिकन फूड, और हाउ इट इज? मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आया एरिजोना, विच इज़ वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ मेक्सिको। तो यहाँ के खाने में मेक्सिकन फ्लेवर का इन्फ्लुएंस बहुत है। It's in a very different if you go to Massachusetts, which is like pretty much as East Coast or like Northeast belt of United States. तो वहाँ का खाना शायद इतने स्पाइस लेवल है, स्पाइस पैलेट आपको शायद एग्जैक्टली ऐसे लगे ना। तो या जो भी करे, जितना भी कोशिश करे कि इनिशियल कपल ऑफ डेज, आई वुड से इवन लाइक फॉर अ मंथ, आपको खाना यहाँ का ब्land सा लगेगा, क्योंकि आपको टेस्ट बड्स को सेटल होने में टाइम लगता है। यहाँ के जेनरिक खाना आपको ब्land लग सकता है, बिल्कुल ब्land लग सकता है, बट आई वोंट मैक्सिकन फूड या मेडिटेरेनियन फूड आपको ब्land लगेगा, और अरेबिक फूड, और जेनरिक अमेरिकन फूड ब्land लग सकते हैं। बट अगेन दैट एक्सपीरियंस कुड वेरी, डिपेंड करता है आप कितने स्पाइस खा रहे हो, आपका स्पाइस टॉलरेंस कितना है। बट इट टेक्स सम टाइम टू settle in. But I don't think this should be a reason that it's not settle in. No, you can say. नहीं नहीं भाई, होमसिक बंदे होते हैं लाइक, बिल्कुल यार ये सबको एक्सपीरियंस होगा, that's so true. आपको कुछ दिन तो आप डेफिनेटली मिस करेंगे, वो आलू पराठे, नहीं तो छोले भटूरे, ये तो मिस करेंगे, बिकॉज राइट अवे आपको ये सब नहीं मिलेगा, या पानी पूरी या चाट, पापड़ी चाट, ये सब क्रेविंग्स आएंगे कुछ। बट आई कैन अश्योर यू, लाइक एज यू stay longer, you can इवॉल्व हो जाते हैं, आप इवॉल्व हो जाते हैं। भूलोगे नहीं, शायद क्रेविंग कम हो जाएंगे, बट ये सब सारी चीजें इंडियन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अगर बहुत क्रेविंग है तो जाके खा सकते हैं, हाँ, बट एक्सपेंसिव रहेगा। इट्स मोर ऑफ लाइक गोइंग टू फाइन डाइनिंग इन इंडिया, जैसे था एक्सपीरियंस यहाँ पे वही होगा। आपको खाना है वही सेम पानी पूरी खाना है या भेलपुरी खाना है, आप वही फिर जाके आलू पराठा का कितना प्राइस है, आप मल्टीप्लाई करोगे 80 से, हमेशा 400 500 रुपया काइंड ऑफ इंडियन में। वही बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं खाना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट इट्स as equivalent to going to a fine dining restaurant in India. ओके, गॉट इट। Like ओके, तो America अब कुछ सस्ता हो सकता है उससे। ओके, तो अभी हम लास्ट में आते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ। सो लाइक हाउ इट इज, लाइक पहले डिस्कस करते हैं कम्यूटेशन, लाइक जब तुम जाते हो लाइक यूनिवर्सिटी, लाइक पास में रहते हो कि लाइक हाउ डू यू कम्यूट? Generally, again, I can say for definitely say for 90-95% of student like international student, वो यूनिवर्सिटी के पास ही रहते हैं, क्योंकि so that they don't have to spend on accommodation, sorry, commute, because in general, United States is a very spread out place. It's not a condensed place, तो बहुत spread out होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहना पड़ेगा, अनलेस आपके पास, यहाँ के गाड़ी सीख के गाड़ी चलाना चाहते हैं या गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हैं। सो
that is again a different whole story of getting a driver's license, paying for insurance, buying a car. गाड़ी गाड़ी से लाइक आई वांट टू आस्क लाइक लाइसेंस आई थिंक वो भी लेना होता है राइट? Yes. Yeah, उसके बाद जैसे driver. इंडियन लाइसेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा? No, I don't believe so. I don't think you in some states they might allow it, but I don't recommend that. Maybe in emergency cases, yes, because like Indian license approve करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ड्राइव वेज डिफरेंट है। इंडिया में हम लेफ्ट में चलाते हैं, यहाँ पे राइट में चलाते हैं। स्टीयरिंग व्हील इंडिया में राइट में होता है, यहाँ पे लेफ्ट में होता है। एंड रूल्स आर स्लाइटली डिफरेंट हियर एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट समथिंग लाइक फ्री वे कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक इंडिया में होता है कि अगर गाड़ी आप चला रहे हो तो आपको रुकने की जरूरत ही नहीं कहीं पे अनलेस यू नीड टू एग्जिट यू टेक से मतलब टू व्हीलर्स के लिए भी लाइसेंस अप्लाई करना होगा? तो इसके लिए स्पेशल सपोर्ट करना होता है क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली कार का लाइसेंस किसी को भी मिल जाएगा वो मुश्किल नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सब ऑटोमेटिव ऑटो आई मीन यू डोंट हैव मैनुअल गियर सो इट्स completely automatic just like you riding a scooty but pretty much like the car बाइक मिल सकता है बाइक का प्रॉब्लम नहीं है बट बाइक में प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ गाड़ी लोग बहुत तेज चलाते हैं इट गोज रियली फास्ट एंड मैंने एक को वर्ड यूज किया कि फ्री वे इज लाइक a stretch of your it can be compared like Indian highways uh, where you do not have to stop anywhere. It's more of like that, so you can go through from one city to another city without stopping anywhere. And if you want to stop or like take an exit, so you have to take an exit like go to a lane and take an exit. So literally you do not have to stop. And speed limits यहाँ पे 65 miles per hour like legal limit है फिर भी लोग चलाते हैं 75 80 पे चलाते हैं 80 miles per hour is a very high speed and if you make a crash on a two-wheeler your survival in my opinion is very slim. So if you're in car, yes, cars are definitely very good here and a lot of safety features. If you crash in your car might be damaged, but your survival rate is pretty high here. Okay. But So how stressful or challenging your life is like at US? कितना स्ट्रेस रहता है? initial phase में तो definitely challenging होता है, particularly not because of the actual work, it's because of a lifestyle change or cultural change, ethnic change, new people, new place, new environment. That takes a while. Again, different people take different time like to actually feel like home here. In my case, it took me a while, like a couple of months to actually feel like home. Some people feel like home right away, but it's a different story for different people. वो एक फर्स्ट फेज होता है लाइफ का यहाँ पे वंस यू गो पास दैट दूसरे दूसरे चीजें आते हैं जैसे एक्चुअल पढ़ाई का स्ट्रेस होता है जैसे अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री यहाँ पे इज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग व्हेन आई से चैलेंजिंग इट मीन्स लाइक you have to do the work here. You cannot take a shortcut here. You still have to do your assignment. You still have to do your project, and you need to attend the classes. If you do not attend the classes, then there is slim to no chance that you can pass that class. So, education-wise, classes are challenging. So, you have to spend time on the ओके whole work. ना यहाँ पे मेरा एक डाउट है जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो जनरली इंग्लिश लाइक यूएस एक्सेंट में कहते होंगे राइट? इनिशियली डू यू फेस एनी सच प्रॉब्लम लाइक अंडरस्टैंड? I would like to be real honest. Like मैं जब पूरे honesty से बात बताऊं मेरे को अमेरिकन प्रोफेसर्स का बात कभी समझने में मुश्किल कभी हुआ ही नहीं मेरे को प्रॉब्लम उन लोगों से हुआ जो एक्चुअली नॉन अमेरिकन है ओके तो जैसे मेरे एक्सपीरियंस में मैं पहले जब आया था यहाँ पे मेरा एक मैथ्स क्लास का लीनियर अलजेब्रा दैट आई हैड टू टेक वहाँ पे एक रशियन प्रोफेसर पढ़ाती थी तो उसका एक्सेंट इतना थिक था वो इंग्लिश में बोलती थी मेरे को समझ में नहीं आता था एक्चुअली क्या बोल रही है जनरली होता है अमेरिकन इंग्लिश इतना क्लीन होता है जिसे हम एक्चुअली अमेरिकन लोग बोलते हैं कि जो लोग टीचिंग के फील्ड में इफ आई कैन अश्योर यू दैट जो लोग टीचिंग के फील्ड में है उनका एक्सेंट इतना क्लीन एंड क्लियर होता है तो आपको कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं लाइक इट्स लाइक द स्लो डाउन वर्जन ऑफ द इंग्लिश दैट इज हियर इन मूवीज दे गो pretty crisp and clear so I don't think वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा हाँ ये हो सकता है नॉन इंग्लिश स्पीकर पढ़ा रहे हैं और उनका टोन चेंज नहीं हुआ है एंड लेट्स से
कुछ हो सकता है ऐसे। मैं बता सकता हूँ कि कुछ एशियन प्रोफेसर है जिनका एक्सेंट आपको समझ शायद हो सकता है, बट इट्स नॉट ए racist comment or anything. It's just like it's not like you won't understand. It just takes a couple of classes or to talk with them and listen to them. Then it settles and then you can definitely understand it. मैं मुझे जब काम करता हूँ, मैं चाइनीज अगर इंग्लिश जब बोलते हैं मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं समझ नहीं हाँ। पाता फिर उनका इंग्लिश। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि आप अगर किसी की बात अगर सुने नहीं है एंड स्लाइटली डिफरेंटली बात करते हैं, जैसे एक्सेंट हो या रेट ऑफ स्पीच, कुछ लोग फास्ट बातें करते हैं, या बोलते जब बोलते हैं वो लोग उनका पिच सही नहीं बैठता है, दैट मीन्स लाइक दे यूज द टोन स्लाइटली डिफरेंटली। वो कुछ अगेन सब लोग तो एक पिच में नहीं बोल सकते, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है अगर थोड़ा बट सा। या लाइक लाइक जो लोग लाइक अगर आपको नहीं पता, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली जैसे कि एक चाइनीज था, सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, हम लोग इंडिया में बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। So I don't know how Americans people speak that, but वो Chinese guy was saying Microsoft IO. So I मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये IO क्या है exactly, समझ रहे हो? So he was kind of killing that jet totally. So American में इसको क्या बोलते हो, like Microsoft Azure? I think it goes like that. Microsoft Azure. I mean, I don't exactly. I mean, maybe saying the pronunciation. I don't exact. I know the meaning of the word Azure, but I may not know the exact pronunciation of that, the exact word. But Okay. I feel Azure is the right thing. But again, I'm not 100% certain of that. Um, yeah, that's awesome. Anyway, तो अभी नेक्स्ट आते हैं, तो मास्टर्स यू आर डूइंग करेंटली, यू आर करंटली डूइंग पीएचडी, मास्टर्स यू हैव ऑलरेडी डन। सो जब आप कोई मास्टर्स करने के बाद व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप, कि अच्छा जॉब पैकेज मिलता है, आई आई हैव हर्ड अबाउट इट, तो व्हाट इज दैट लाइक, फ्यूचर स्कोप्स क्या हो? Um, तो एक बार मास्टर्स खत्म होता है तो यू हैव डेफिनेटली कपल ऑफ ऑप्शंस। अब डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हैं राइट अवे। जो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका गोल तो वही होता है कि टू फिनिश और लाइक कंप्लीट द डिग्री एंड गेट इनटू द मार्केट। Obviously, that's there. And second thing is like if you still want to continue your education, you can continue your education by the next degree is like obviously PhD program, like joining a PhD program. But anyways, like if you continue, sorry, if you're willing to start a PhD program, then आपको वही स्टूडेंट वीजा कैरी ऑन रहेगा। अगर आपको जॉब करना है देन आप स्टूडेंट वीजा में 3 साल तक जॉब कर सकते हैं एंड उसके बीच में आपको H1B लॉटरी के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपका H1B लगता है देन आपका वीजा शिफ्ट स्टूडेंट वीजा से शिफ्ट होके आपका H1B वीजा हो जाएगा एंड उस पे आप काम कर सकते हैं। तो इनिशियली जो होता है वो स्टूडेंट वीजा में आप जाते हो, आप काम नहीं कर सकते हैं? स्टूडेंट वीजा में नहीं बिल्कुल कर सकते हो। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, समर में होता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड वो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे फुल टाइम लोग करते हैं। Generally, I'm saying this over generally. After completion of degree, you actually work full time, like 40 hours a week, and so वो तो होता ही है। आपके पास 3 years का अपॉर्चुनिटी है एज ए स्टूडेंट। आपके स्टूडेंट वीजा जनरली आपको 5 years तक अप्रूव होता है। 2 साल की पढ़ाई होती है मास्टर्स एंड 3 years का जॉब, सॉरी, जॉब एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। बट उसके स्टूडेंट वीजा वहीं तक ही है। उसके बीच में अगर आपको जॉब कंटिन्यू करना है तो आपको H1B के लिए एप्लीकेशन डालना होगा। अगर आपका H1B में लॉटरी में लगता है हो सकता है। अगर यहाँ पे एक और एक केस भी आता है कि नॉन कैप एग्जाम H1B, जिसमें आपको लॉटरी में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप इस स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई होता है अगर आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन में या आपका जॉब इंजीनियरिंग हो सकता है बट आपका जॉब लेट्स से एक यूनिवर्सिटी के अंदर है या नहीं तो कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर है जो एकेडमिक से रिलेटेड हो एंड नहीं तो नॉन प्रॉफिट हो, तो उन सब केसेस में आपको वर्क वीजा डायरेक्टली मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई लॉटरी या किसी जो H1B का जेनरिक लॉटरी होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं हो। ओके, सो और एक L1 वीजा भी होता है राइट, लाइक कंपनी जनरली L1 वीजा पे लेती है? यस, L1 वीजा जो होता है उसमें आपको अगर इंडिया में काम आप कर ही रहे हैं एंड आप कोई हायर मैनेजर पोजीशन पे है एंड उसी सेम मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांच अगर यूनाइटेड स्टेट्स में है देन
यस, उसमें एक केस बनाया जा सकता है कि आपका डायरेक्ट you can come here for a certain number of years to work, and you can work that many years. And if you still want to pursue, like, or want to stay here, then you have to take that. Uh, you have to apply for like immigration status here, like which is like applying for a green card, or like you have to take part in the application process of green card or anything. The next step. रिसर्च फील्ड में कोई अलग नहीं होता है, J1 और समथिंग? J1 वीजा भी है। ये स्पेसिफिकली ना मेरे को पता है कि जो लोग एग्जैक्टली स्टूडेंट नहीं है बट वो लोग फुल टाइम जॉब भी नहीं कर रहे, इनको ये वीजा मिलता है। जिनका काम है कि आप काम तो कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, बट आप एग्जैक्टली स्टूडेंट नहीं है, बट आप एग्जैक्टली हाँ फुल टाइम प्रोफेशनल भी नहीं है। जीवन बिकॉज मेरे को जितना पता है कि पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी कंप्लीट करते हैं, then they want to pursue a postdoc. So postdoc positions usually have J1 visa, and they are not exactly full-time salary holders or like full-time job like a corporate world. तो उनके पास होता है। कुछ और केसेस में जीवन वीजा भी दिया जाता है, but I do not have full information about G1 visa because the majority of the students who come here are F1. नो इट्स नॉट। तो बहुत इन्फॉर्मेशन लाइक अभी पूरा कंप्लीट लाइक मेरा भी अंडरस्टैंडिंग हुआ कि लाइक हाउ दिस एप्लीकेशन प्रोसेस गोज ऑन। तो इसके बाद भी बच्चों को बहुत डाउट हो सकता है। इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आप नीचे लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं सौभाग्य से कनेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा, सो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड लाइक बुक हिम आउट। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर किसी भी प्रोसेस में अगर लाइक यू हैव एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क हिम आउट। ओके एंड लाइक आज के वीडियो में हमने जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल। सो मैं सौभाग्य से पूछ के आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड अगर कोई और क्वेश्चन है यू कैन ऑल्सो आस्क, सो दैट वी कैन कम विथ अनदर वीडियो, अनदर एपिसोड विथ सौभाग्य। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही चैलेंजिंग होता है, सबके लिए डिफरेंट होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स कॉस्ट इन्वॉल्व ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप फ्री में अप्लाई कर रहे हो, पैसे भी लग रहे हैं। सो अगर अच्छा जानकारी लाइक आपको जानकारी नहीं है तो इट टोटली अननेसेसरी टू वेस्ट सच हाई अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे आप फंस भी सकते हो, राइट? लाइक व्हाट डू यू से सौभाग्य? No, I completely agree with that. The most important aspect of like this journey is like having the right information for sure, because you're not in your home country, you are somewhere else. Their laws are different, regulations are different. If you're getting going there or trying to have a life there, even for a short term or like to pursue education, or even if your goal is to work there, तो आपको पता तो होना चाहिए यहाँ पे रेगुलेशन क्या है, क्या लॉ क्या है, एंड एप्लीकेशन कहाँ पे भरना है, कैसे भरना है, एंड आप क्या एग्जैक्ट एप्लीकेशन है, which university to apply, if this program is actually right for you or not. So there are actually a lot of questions. I mean, in short, I can still say, okay, apply university, get your visa approved and come. As simple as that. But there are a lot of actually unanswered questions in there that you have to get like based on your criteria, specific criteria, what you're यू हैव टू सीक फॉर गाइडेंस। ऐसा इतना इजी प्रोसेस है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड दैट। ओके ओके, तो फॉर एनी अदर सच थिंग्स यू कैन कनेक्ट विद सौभाग्य। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। सो लाइक डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑल, बाय बाय, Right. थैंक यू। Thank you.